Hello everyone, this is your Naz and I hope you all are hale and hearty. I'm also fine. So today I'm here with the topic which is a poem. I'm going to explain the poem The Shed. So let's have the introduction first. The Shed poem is written by Frank Flynn. Flynn, Frank Flynn. It is about the speaker's fear and curiosity about the shed which is at the end of his or her garden. As it is described here a child, so his or her will be used, as we are not sure the child is a girl or a boy. So, the poem deals with the psychology of a child to think over the information received from his or her, again depending upon that her brother. It also shows playful rivalry between siblings. So, what is in the poem? पोइम जो है वो फ्रैंक फ्लाइन ने लिखी है और पोइम हमें बताती है कि एक बच्चे के माइंड के अंदर क्या क्यूरियोसिटी चल रही है, किस चीज़ के बारे में डर चल रहा है और उसका कैसे अपने भाई के साथ, अपने ब्रदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. So before moving to the poem, we will discuss what is a shed. A shed is a temporary structure built to shelter something. Shelter किसी को छत देने के लिए, किसी को घर देने के लिए. There are many types of sheds. ठीक है, बहुत सारे sheds होते हैं. We have seen in our daily life as well. And now let's discuss the vocabulary part first of all. So first is rusty. We will go through the difficult words in the very beginning so that when it comes in the stanza it becomes easier for us to understand. So rusty is corroded by rust. जंग लग जाती है जिस चीज़ को. And creak is make a sharp sound. एक तीखी सी चूं चूं की आवाज़, जिसकी चीज़ को जंग लगी होगी अब उसमें से एक चीखने की जैसी आवाज़ आएगी जो कि तीखी सी आवाज़, sharp sound. And hinges is a jointed device to pivot the door, जो उसको जोड़े रखने के लिए, जैसे दरवाजे के जैसे हमारे कब्जे होते हैं ना, जिनके ऊपर वो जिसके साथ वो जुड़ा होता है वॉल के साथ, that jointing devices are called the hinges. And staring is looking at something constantly, means without any interruption, constantly looking at something. And peek is look in, झांकना अंदर किसी चीज़ के. And dusty is covered with dust, the very easy one. Okay, so let's move further towards the explanation. So the first stanza opens with the description of shed which is at the end of the speaker's garden, जो कि स्पीकर के गार्डन के बिल्कुल एंड पे है shed. वहाँ से जो पोइम है वो ओपन होती है. लेट्स रीड द स्टैंजा नाउ. There is a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. अब जो पोइट है वो डिस्क्राइब कर रहा है. The speaker is describing means the Frank Flynn is describing the poem as a little child. The speaker is a little child here. So उसे बताया है कि हमारे घर के पीछे एक शेड है with a spider's web hanging across the door, और जिसके दरवाजे पे एक मकड़ी का जाला बना हुआ है. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and listen. I'll open the door one day. Now,
स्पाइडर का वेब है वहाँ पे जो डोर पे लटका हुआ है. द hinges are rusty. Rusty means जंग लगी हुई है. hinges क्या बोला था मैंने, दीवार के कब से. एंड creak in the wind, मतलब विंड में जब हवा चलती है दूर से तो वो जो रस्टी hinges है उनमें से चीखने जैसे शार्प साउंड्स आती हैं, आवाज़ें आती हैं. जैसे हमारे घरों में भी वी हैव सीन कि जब कोई चीज़ जंग लग जाती है तो उसको कैसी आवाज़ें आती है, वो चीं कचर कचर सा करता है ना, लाइक दैट. सो व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड लिसन, कि जब मैं बेड पे होता हूँ, मैं लेटा हुआ होता हूँ या होती हूँ, हिज और हर, आई लिसन, मुझे वो आवाज़ें कौन सी, व्हाट आई लिसन, द क्रीक साउंड्स ऑफ दैट रस्टी हिंज एंड दैट डोर, राइट. आई ओपन द डोर वन डे, और मैं क्या सोचता हूँ कि मैं एक दिन वो जो दरवाज़ा है वो ज़रूर खोल दूँगा. सो द above stanza beautifully describes the spider's web, rusty hinges and creaking sound when the wind passes through it. The speaker thinks about the scary things at the bedtime. Now what are these scary things? That creaking sound and rusty hinges and spider web are the scary things, yes, which he used to think during he's about to sleep. He or she has a strong desire to open the door and peep into it. मतलब वो डोर खोले और उसके अंदर झांक के उसके अंदर जाए, देखे कि अंदर है क्या, किसकी वो आवाज़ें आती हैं. So here lies the imagery. Before moving to stanza 2, let's see the literary device used here in first stanza. It is the imagery, means showing your representation through the images, through the pictures. The poet is really successful in bringing the image of the abandoned shed. Abandoned मतलब जो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, in front of the eyes of the readers through the selected words. Selected means very choosy, very preferable words like rusty hinges, spider webs, dusty old window and cracked window panes. All these things shows that पूरी की पूरी हमें इमेज बताई जा रही है कि जो शेड है वो बहुत पुराने टाइप का अबैंडन्ड हो चुका है. राइट, आई होप इट इज क्लियर. सो लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा. So there is a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I'll peep through that window one day. So now the speaker is saying कि वहाँ पे एक डस्टी जिस पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी है, पुरानी सी विंडो है अराउंड द साइड्स पे, विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास. जो कांच का शीशा है उसका वो 3 जगह से टेढ़ आ चुके हैं, उस पर क्रैकिंग्स हैं. आई ऑफन थिंक देयर इज़ समवन स्टेयरिंग, मीन्स लगातार कोई मुझे देख रहा है, लुकिंग एट मी, ईच टाइम दैट आई पास. जब भी मैं उस विंडो से या शेड के पास से निकलता हूँ तो उस विंडो पे जो 3 क्रैक्स हैं, 3 क्रैक्ड panes of the glass, it seems that someone is looking at me through that window. अब ये सारी चीज़ें कौन सोच रहा है? स्पीकर. तो I'll peep through that window one day. बार बार जो चाइल्ड है, जो स्पीकर है, उसको इस बात की क्यूरियोसिटी है कि मैंने अंदर जाके देखना है, अंदर है क्या ऐसा. मीन्स देखो अब यहाँ पे भी क्या है, सुपर नेचुरल कॉन्टेंट एलिमेंट इज शोन, लाइक समवन स्टेयरिंग एट मी. समवन मीन्स सम घॉस्टली सुपर नेचुरल पावर्स आर सीइंग द चाइल्ड. सो the abandoned shed has old dusty windows, cracked panes. The stanza is an extension of the description of shed. So in first stanza also we got the description of shed, and this stanza is also describing the shed. How uncared, dilapidated it was, means कितना उसका बेध्यान था, उसको की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसा ही खराब सा पड़ा है उधड़ी बुधड़ी शक्ल में. The speaker thinks someone is staring at him, her each time she passes by it. That was the fear in his or her mind. अब देखो मैंने 2 चीज़ें बोली. अब I'll peep through that window, जो ये बात बारी बारी आ रही है, that shows
कि जो स्पीकर है वो क्यूरियस है टू नो कि व्हाट इज़ इनसाइड द शेड, बट साइड बाय साइड पे क्या है, जो एक उसको लगता है, उसकी ये इमेजिनेशन है कि कोई चीज़ उसको देख रही है थ्रू द विंडो, वो क्या उसे शो करती है, द फियर एलिमेंट, फियर इन चाइल्ड्स माइंड। तो चाइल्ड की जो माइंड साइकोलॉजी है, इन द वेरी इंट्रोडक्शन आई हैव टोल्ड यू दैट विल got to know the child psychology about the thing, about the shed. So that is the curiosity and the fear, right? Okay, so let's move to stanza 3. Now we will get the explanation of that fear, why he is thinking that someone is staring at him. Here lies the revelation. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. Now, अब बात क्या है कि स्पीकर मीन्स द चाइल्ड इज सेइंग कि मेरा भाई मेरे से कहता है कि देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, कि शेड के अंदर कोई भूत है, सम घोस्ट इज़ देयर, और वो क्या है, हु हाइड्स अंडर द रॉटन फ्लोर बोर्ड्स, कि जो फ्लोर के बोर्ड्स हैं रॉटन हुए, गले सड़े पड़े, उनके नीचे हाइड्स यानी छुपा हुआ, उनके आगे उनके नीचे छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, आई मीन्स द चाइल्ड, द स्पीकर, के अगर मैंने कभी भी डेयर किया, हिम्मत की, टू सेट फुट इनसाइड मीन्स अंदर जाने की, किसके अंदर, शेड के अंदर, दरवाज़ा खोल के, he'll jump out and chop off my head. Now who is he here? The ghost. Very good. I think it is quite, let me, okay, so now who is he here? The ghost. He will jump. तो ghost अंदर है तो ghost ही jump करेगा ना, and chop off my head. Whose head? I, and I is the speaker again. But I'll take a peek one day. पर एक दिन मैं अंदर ज़रूर जाऊँगा ही जाऊँगा, मतलब उसके सर पे एक ही धुन सवार है. So the third stanza clearly says how these fearful things went into the minds of the speaker. Her brother told her about the ghost who hides under the rotten floorboard. He or she was also told that if she dared to peep into it, the ghost would jump out and would chop her head, कि उसका सर कुचल देगा कि अगर उसने अंदर जाने की हिम्मत भी की तो, राइट। तो मतलब ये जो डर है उसके ब्रदर ने बिठा रखा है उसके माइंड में। नाउ लेट अस डिस्कस द एटमॉस्फेयर ऑफ द पोएम। देयर इज अ spooky, scary atmosphere in the poem. It is brilliantly described with the help of presence of ghost under the rotten floorboard and its section of chopping off the head if someone enters into it. Right, so the atmosphere is quite supernatural. So now the last stanza of the poem. Here we go. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon, but not just yet. So now the speaker is saying, I is again the speaker, that there isn't really a ghost, कि वहाँ पे सच में ऐसा कोई घोस्ट नहीं है. My brother tells lies to keep the shed for his den. उसने अपने den के लिए जो शेड है उसको रखना है, इसलिए वो उससे झूठ बोलता है ताकि वो शेड के अंदर ना जा पाए. वो कौन? The speaker, the child. There isn't anyone staring or making strange noises. मीन्स कि वहाँ पे कोई भी anyone मीन्स कोई घोस्ट ऐसा नहीं है जो स्टेयरिंग मीन्स उसके ऊपर लगातार उसको घूर रहा हो या फिर कोई स्ट्रेंज मतलब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा हो, ऐसा कुछ भी अंदर नहीं है. एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब. और जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो भी अपने जाले से जा चुका है. सिंस आई डोंट नो व्हेन, कहता ये तो मुझे पता नहीं व्हेन, आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, पर कहता जल्दी ही मैं वहाँ पे जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, पर लेकिन अभी
नहीं. So now the concluding part says that the speaker knows there is no ghost in it. Means अब लास्ट पार्ट में उसकी जो क्यूरियोसिटी है, उसका जो फियर है, उसके ऊपर क्या है, कवर अप कर दिया गया है कि जो स्पीकर है उसको पता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है. And he or she convinces that her brother told a lie to keep the shed for his own hiding place. Then when they are at play, perhaps hide and seek. ओके, तो मतलब अब इस स्टेंजा में क्या है, उसको पता चल गया कि वहाँ पे कोई भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं है भाई. उसका जो ब्रदर है उसको ऐसे ही डरा रहा है ताकि वो अपने डैन के लिए, मतलब जब भी वो खेलें, परहैप्स इट इज़ नॉट क्लियर बट इट इज़ शोन विद द हिंट्स कि जब भी वो खेलते हो तो अपने छुपने के लिए उसके भाई को वो जगह चाहिए. इसलिए वो नहीं चाहता है कि जो स्पीकर है, द चाइल्ड, वो उस शेड में एंटर हो. तो इसलिए वो भूत प्रेत की चीज़ों से उसे डरा रहा है डेफिनेटली. सो द स्पीकर, इसके बाद द स्पीकर ऑल्सो नोज दैट नोबडी मेक्स स्ट्रेंज नॉइसेस एंड स्पाइडर्स हैव गॉन फ्रॉम हिज वेब. स्पाइडर्स भी जा चुके हैं और कोई भी वहाँ पे स्ट्रेंज आवाज़ें नहीं निकालता है. द स्पीकर सीम्स डिटरमाइंड टू गो इनटू दैट शेड वन डे. एक दिन वो पक्का उस शेड के अंदर जाएगा. वो इतना डिटरमाइंड है, उसका इरादा इतना पक्का है. द स्पीकर वॉज नॉट रेडी टू गो इनटू इट राइट नाउ, बट वन डे ही वुड सर्टेनली गो इनटू इट. दिस शोज हिज फियर एंड क्यूरियोसिटी. मीन्स अभी भी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डर है, बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी टू गो इनसाइड राइट नाउ. अभी वो जाना नहीं चाहता क्योंकि अभी कहीं ना कहीं वो बच्चा है, वो डर रहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे कोई घोस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर सच में हुआ तो मीन्स इट इज़ हिज फियर. बट ही वांट्स टू गो इनसाइड एंड चेक आउट द थिंग्स in the shed, so that is his curiosity about the. Okay, so here lies the conflict and tension also. There is a clear conflict in the mind of speaker between what he thinks. Conflict मतलब एक उसके मन में ही ऐसा झगड़ा सा चल रहा है अपने ख्यालों से, अपने थॉट्स के साथ. कौन कौन सा? जो वो सोच रहा है बच्चा उसके साथ, एंड व्हाट ही वांट्स, वो चाहता क्या है, सोच क्या रहा है, डर रहा है, वो घोस्ट है, उसके अंदर ये आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से, है ना. और चाह क्या रहा है वो, कि वो अंदर जाके देखे उसको. ही वुड पीप इनटू इट कि अंदर है क्या. एंड व्हाट हिज ब्रदर टोल्ड हिम, उसके ब्रदर ने बोल दिया है कि वो अंदर जाने की उसने हिम्मत करी तो घोस्ट विल चॉप ऑफ हिज हेड. तो इन तीनों चीज़ों के रिलेटेड उसके माइंड में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन. सो दिस is all about today's poem. Let me ask a few questions to you about it for the recapitulation. So, who is the poet of the poem? It is Frank Flynn. And where the shed is located? The shed is located at the bottom of the speaker's garden. And the meaning of dare to set foot inside will be to go inside, and the window inside the poem is broken. Definitely we got to know the 3 cracked window panes, so the window is broken. And he or she is curious or afraid. Again and again, what condition is going into the child's mind? He is curious and both afraid. And who is the speaker? देखो, who is the poet? Is Frank Flynn. And who is the speaker? जो poem बोल रहा है, the speaker is the child. And one more thing comes here, the spider web. The spider web, the dusty, the rusty things, what they denotes? They denotes that the shed is never opened. उसको कभी खोला ही नहीं गया है shed को. And what the speaker wants means the author's brother wants that the child must not enter the shed. He wants to retake the shed. So I hope all this poem might be clear to you. So that's all for the day. Thank you so much. Have a good day. Have a blessed day ahead.